Hello, everybody. I'm Professor Prasida Nair, an MA in Literature with more than 33 years of experience. I've been mentoring so many students in English for 12th standard. Students, your exam is approaching quite fast, and I'm sure that most of y'all are quite tensed about your examination. But I'm here to assure you all that for your board examination, you can score extremely good marks if you follow my tips. So this video, इसको जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना, because this is going to be your guide on how to score more than 95 marks in your board examination. So shall we begin, students? Let's move forward. And I'm going to today tell you all the secrets of scoring 95 plus marks in your HSC board examination. First, a small brief paper pattern. Textual passage, non-textual grammar, non-textual passage, summary writing, mind mapping, scene poem, appreciation. And then comes the tough one, the writing skills, जिसमें बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है. Now you will find that you have A, B, C, D. A में आपको होगा virtual message, statement of purpose and group discussion. इसमें से एक करना है आपको. Most of you all would prefer virtual message. So what I'm going to do today is I'll tell you all the advantages and disadvantages of some of all the writing skills and which one, according to me, would be the best one for you all. You have email writing, report writing, and interview writing. इसके बाद you have speech writing, comparing, and expansion of idea. The last one is review writing, blog writing, and appeal writing. And of course, the tough one to crack, the novel, section 4. इसमें starting का जो 4.1 है, which is objectives. Then you have to serve with love, which is 4.2. And then you have 4.3, around the world in 80 days. And the last one, 4.4, the sign of 4. All these, that is 4.2, 4.3, and 4.4, you should complete it in around 50 words. सारे 4 marks के questions है. Let us find out कि exam के पहले, paper लिखने से पहले, what exactly you're supposed to do. But you know, there is in your question paper, you have something called as important instructions. ये important instructions आपको पढ़ने के लिए है. Do not be in a hurry to read the scene passage. पहले ये instructions को ध्यान से देखो और सुनो what I'm trying to tell you. Now, each activity में complete sentence लिखने का, one word answer नहीं लिखने का, ना सिर्फ correct number डालने का. You will not be given any marks. For example, true or false. पूरा sentence लिखो, true लिखो. पूरा sentence लिखो, false लिखो. Are you all getting it? Otherwise, your half marks will be deducted. अच्छा, now suppose अगर आपने सिर्फ एक्टिविटी नंबर लिखा, जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना, आपने सिर्फ नंबर लिखा तो आपको 0 दिया जाएगा. वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टैबुलर फॉर्म, जैसा है वैसे लिखने का. फॉर एग्जाम्पल, वोकैबुलरी में 12th स्टैंडर्ड में दे गिव अ टेबल और उसमें वर्ड होगा, सिनोनिम होगा, वर्ड होगा, उसका मीनिंग्स होगा. आपको वो टेबल बच्चे लोग ड्रॉ करना है. आर यू ऑल गेटिंग दिस क्लियर? Otherwise, you will not be given marks. Color pens and pencils are not allowed. Blue pens and black pens are allowed. Pencils are also allowed. So, black pens, blue pens, and pencil, it is allowed, but color pens and pencils are not allowed. I hope this is clear. अच्छा, अभी क्या होगा ना, multiple answers कभी कभी आप लोग लिखते हैं. For example, I'll tell you. For example, you will get fill in the blanks. और पैसेज में से निकालना है. यू मे फील, अरे इसमें तो 2 आंसर मुझे लगता है, और आप दोनों लिखा, 0. अगर आपको आया नेम द फॉलोइंग और आपने 2 ऑप्शन लिखा, 0. मीनिंग्स आपको निकालने को बोलेगा फ्रॉम द पैसेज और आपको लगता है 2 ऑप्शन हो सकता है, एंड यू राइट बोथ द ऑप्शंस विद अ स्लैश, 0. आपको सिर्फ और सिर्फ हर क्वेश्चन का जब भी कुछ पूछा जाएगा एक ही आंसर होता है. You cannot give multiple answers. I hope this is very clear, children.
Sequence section 1, section 2, section 3, section 4. Follow maintain the sequence. Do not try to change the sequence. I hope this is clear, children. Okay, now we are coming to the pre-examination strategies. का मतलब क्या होता है? एग्जाम के पहले अब आप प्रैक्टिस करोगे, तो कैसे प्रैक्टिस करना है जिससे आपका स्पीड बढ़े और आप टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट कर पाए. So for that you have to keep a watch and take the previous board papers, start solving them, keeping the time in front of you. उसको जितना हो सके 180 मिनट्स के पहले अराउंड 170 मिनट्स तक try to complete the paper. So today I'll be discussing with you the time limit also, कि हर क्वेश्चन कितने मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है. थोड़ा ऊपर हो जाएगा initially, but then once the confidence builds up, you will be able to complete the paper on time. Now, you know कि आपको किस में फटाफट आप लिख सकते हो. Which are the sections which you can quickly complete? For example, grammar you can quickly complete. Appreciation you should be able to complete fast because you have gone through it. आपने thoroughly आप उसको पढ़ चुके हो. The writing skills, you already know the virtual message कैसे लिखना है. You already know the interview writings, the kind of questions that can come. So very, very quickly you go through them and then you will be able to complete it. I hope this is clear, children. So let's find out which are the ways to solve the paper. Now you will find the time management. मैंने हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया है. जैसे कि 12 मार्क्स का जो सीन पैसेज है 25 मिनट्स, अनसीन पैसेज को भी 25 मिनट्स, डू एज डायरेक्टेड 5 मिनट्स. अब ये एमसीक्यू टाइप है, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट बिफोर 5. एक स्पॉट द एरर होता है, दैट्स ओनली थिंग दैट जिसमें एमसीक्यू नहीं है यू कैन ईजिली स्पॉट द एरर. नॉर्मली वो वर्ब होता है, कभी कभी एडवर्ब होता है. इंस्टेड ऑफ एडवर्ब दे विल गिव यू एन एडजेक्टिव. ओके, ly मिसिंग होगा, सो यू विल हैव टू चूज दैट. मेजॉरिटी टाइम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इश्यू होता है, तो वर्ब में प्रॉब्लम होता है. दोज आर द एरर्स दैट यू विल फाइंड. समरी राइटिंग, पॉइंट्स दिए रहते हैं, आपको उस पॉइंट्स के मुताबिक आपको वो समरी बनाना है. ओके, सो इट बिकम्स वेरी इजी. माइंड मैपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स योर क्रिएटिव आइडियाज. आपको वो पूरा ड्रॉ करना है. पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, पेन से हो सके तो मत, नहीं तो पेन से करेगा तो भी चलेगा, बट देन आप इफ यू वांट टू इरेज इट एंड ऑल दैट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. सो दैट इज व्हाई आई नॉर्मली सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो विद टू राइट ड्रॉ विद अ पेंसिल. पोइट्री आई हैव गिवन यू 15 मिनट्स जिसमें 10 मार्क्स होता है. 2 मार्क्स का कंपोज योर पोएम्स होता है, जो आप कुछ भी लिखो तो आपको मार्क्स मिलेंगे. थोड़ा सोचना है कि क्या लिखना है. Figures of speech you're already prepared. Okay, so this will take 15 minutes. Now children, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है सीन पैसेज, उसमें थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा लगेगा बिकॉज यू नो द फर्स्ट टाइम यू आर अ लिटिल नर्वस, यू आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा माइंड थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा. बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे आओगे, by the time you come to the poetry section your confidence will rise, will be more, and आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा. So you should be able to complete this before 15 minutes. अप्रिसिएशन 10 मिनट्स दिया है बच्चे लोग, बट हो सके तो उससे कम में ख़त्म कर लेना बिकॉज यू शुड बी थारो विथ योर अप्रिसिएशन बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन. वो कैसे कम थरो करना है इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. राइटिंग स्किल्स 40 मिनट्स दिया है, नॉवेल 40 मिनट्स दिया है. सो 80 मार्क्स के पेपर में आई हैव गिवन यू 175 मिनट्स and 5 minutes is for revision. I'm pretty sure that you will be able to complete it before 175 minutes. Now, what is the next thing? This is the winner, my dear child. This is what will make you get extremely good marks in your appreciation. क्या करना है आपको? एक फुल स्केप पेपर में ये टेबल बनाना, चार्ट बनाना.
एक साइड यहाँ पर पूरे पोएम्स है, पोएट है, थीम है, राइम स्कीम है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, स्पेशल फीचर्स है। अब चाहे तो स्पेशल फीचर्स के बदले आप उसको और एक्सपैंड कर सकते हो, लैंग्वेज लिख सकते हो, सिंबॉलिज्म, इमेजरी, आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो। एंड देन मैसेज एंड व्हाई यू लाइक द पोएम। नाउ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। लिख लो। ये एग्जाम के पहले आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। कीप इट, स्टिक इट टू योर स्टडी टेबल, कैरी इट विथ यू, take it with you when you go to your college. Don't take it inside the examination hall. Keep it with you, learn it thoroughly well. Now did you notice over here many figures of speech में map डाला है, metaphor, alliteration, personification and parenthesis, which is a very important figure of speech of the song of the open road. अब Indian weavers में rhyme scheme है, so it is not a free verse. अब उसके figures of speech क्या है? What is the theme? It's about the life. Am I right or wrong? How life is. If there is birth, there has to be a death. And the special features mean the language is very lucid. It's very easy to understand. Inchcape Rock में message is very clear. It has got a lot of moral values. As you sow, so shall you reap. Am I right or wrong? वो है आपको. Now, it's a didactic poem. That can be a special feature. What do you mean by didactic poem? A poem that gives you moral value. समझ में आ रहा है? तो ये टेबल ऐसे बनाते जाओ. Father returning home, it tells us about how parents are neglected today. Alienation, are you getting this clear? Alienation, that's a very important theme. Money, it's about how money is not important. Yes. Beauty, internal beauty, external beauty, small towns and rivers. So ये about nature, ये सब जो है इसका थीम आप ऐसे टेबल बना लो और आप लिखना शुरू लिखो. And trust me when I'm telling you this, this is one of the best methods to score marks and to remember your appreciation. Now, novels. सारे objectives कर लो. Pura ka pura. If you know, I've already given you all the scrap notes. Am I right or wrong? Odd man out, match the column, choose the correct alternatives. All the writers' names, unke novels. World's first novel, The Tale of Genji. The first European novel, Don Quixote. The elements of novel, the types of novels, the novellas, their names, the writers, the novels published in different centuries, the Indian writers, the trio. Do you remember the trio? Okay, the Indian writers, the trio. ये सब आपको अच्छी तरह से करना है. 4 marks, you should be able to get it in your pocket. It's easy, but then you have to go through it, children. Now we are coming to the 50 words के answers. बच्चे लोग, this is going to be a little मेहनत वाला काम. 4.2, 4.3, 4.4 मैंने सब आपको notes दिए हैं. I've provided it with you all with lots of notes. Character sketch of the narrator. Who is the narrator? E.R. Braithwaite. What was the theme? Racism. Racism se lekar when he enters the school, it is the student-teacher relationship. So initially the problems that arises where the students do not respect E.R. Braithwaite, and how Braithwaite transforms himself, खुद को बदलता है, और किस तरह से there is a student-teacher relationship किस तरह से खूबसूरत बनता है, and how the half-yearly report जब present करता है, how the narrator becomes so happy at the end of the half-yearly report, that satisfaction that he gets. The characters of Miss Phillips, Miss Joseph, Denham, are you understanding? All these are extremely, extremely important. किस तरह से at the end how the change takes place in the students, and how the teacher takes them out for excursions and to exhibitions and to the museum, and how he changes the students become an important part of the story of the novel. Okay, as I'm keeping on repeating it, all my exam ke jo questions ke answers, because I've provided you all with answers also, children.
my notes, revise them again and again and again. 4.3, Around the World in 80 Days. The character sketch of Phileas Fogg, a very calm person, am I right or wrong? Passepartout, his servant, excited. No, he, in fact, when Phileas Fogg becomes very depressed as if he thinks that he has lost the wager, Passepartout kitna tension mein ho jata hai to see his master so depressed. Oda, with whom Phileas Fogg falls in love, and how he wants to propose to her, but he's scared that as he cannot give her a better life, he doesn't propose to her. But Oda khud usko propose karta hai. Do you remember the story? Am I right or wrong? And how Phileas Fogg Passepartout ko send karta. He sends him to bring the priest so that he could get married. And तब Passepartout को समझ में आता है that actually Phileas Fogg has gained a day. एक दिन पहले वो पहुंच जाता है and he has actually won the wager. Am I right or wrong? 80 days he is able to win the wager. Now यहाँ पर आपको character sketch में पूछा जाएगा. Phileas Fogg was as calm, am I right or wrong, as a cucumber, right? लेकिन throughout the journey Phileas Fogg was very calm. एक इंसिडेंट ऐसा होता है where he loses his calmness, which is that incident जब वो इंस्पेक्टर फिक्स को लिवरपूल के जेल में he gives him a punch. Do you remember that particular scene? Yes or no? He gives him a punch, and that is the only time when he loses his temper. Otherwise he is very very calm. Now यहाँ पर theme क्या है? How honor plays a very important role, how he finds love, how time is important, yes or no, ये सब चीज जो है important है. The significance of London, the Reform Club, how it becomes a part of the novel, is an integral part of the novel. तो बच्चे लोग ये सब आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स में मिलेगा, मेरे नोट्स में मिलेगा. Last but not the least, the sign of 4, we have Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mary Morstan, her father, Captain Morstan, his friend, Mr. Major Sholto, Jonathan Small, who is the one who जो ये पूरा जो स्टोरी का मेन एक एंटेगनिस्ट है, बिकॉज ही इज द वन जो इस ट्रेजर के पीछे है. ही इज द वन हु एक्चुअली स्टील्स द ट्रेजर अलोंग विद द अदर 3. डू यू रिमेंबर दैट दोस्त खान, मोहम्मद एंड ऑल दैट, हाउ दे स्टील द ट्रेजर, एंड फिर किस तरह से जॉनथन स्मॉल एस्केप्स फ्रॉम द अंडमान से जब वो एस्केप करता है. लेकिन उसके पहले ही मेजर शोल्टो पूरा का पूरा ट्रेजर लेकर वो इंग्लैंड वापस आ जाता है. कैप्टन मॉर्स्टन, दैट इज मेरी मॉर्स्टन के पिताजी जो है, किस तरह से व्हेन ही गोज टू मीट मेजर शोल्टो, उनका डेथ हो जाता है. किस तरह से मेरी मॉर्स्टन को 6 years she receives 6 pearls. Do you remember that? And last जब वो pearl मिलता है, किस तरह से she is called to the Lyceum Theatre, and how along with Sherlock Holmes and Dr. Watson she reaches there. और वहाँ से किस तरह शर्लॉक होम्स वो इन्वेस्टिगेशन कर कर वो ट्रेजर तक पहुँचता है, और किस तरह से वो केस को सॉल्व करता है. ये सब आपको मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी होता है. यू हैव टू यू आर सपोज टू गो थ्रू द all these stories and link them together. The year has to be linked. 1857 में क्या होता है, 1888 में क्या होता है, all these things needs to be linked, children. 1886 में क्या हो जाता है, everything needs to be linked. Okay, one important thing, डॉक्टर वॉटसन और मेरी मॉर्स्टन के बीच में थोड़ा रोमांस है. डू यू रिमेंबर दैट? बट डॉक्टर वॉटसन wants to marry Mary Morstan, but he is hesitant because he feels that once she gets the treasure, he won't be able to, she will become very rich and he won't be able to marry her. But the moment जब जॉनथन स्मॉल वो पूरा ट्रेजर जब वो फेंक देता है रिवर थेम्स में, then she comes back to a normal situation, normal life में आ जाती है. And then Dr. Watson proposes to Mary Morstan. Do you remember the last जो scene है टेक्स्ट बुक में, वो लास्ट जो पेज है, and in this way all's well that ends well and they both get engaged. तो ये पूरा जो भी
चैप्टर्स है ना बेटा, फ्रॉम 4.2, 4.3 और 4.4 बच्चे लोग आपको अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में स्टोरी को समझना है, लिंक इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड यू कैन श्योरली स्कोर. 2 नहीं मिलेगा तो भी 1.5 गारंटी के साथ मिलेगा. Are you all understanding this? Handwriting, of course, matters. Okay. Writing skill. Now, writing skill में मैंने आपको बोला था SOP. जो writing skills मैं यहाँ पर अभी बताने जा रही हूँ, I will tell you all the advantages and disadvantages. Virtual message बच्चों का favorite, am I right or wrong? क्योंकि आपको पता है बहुत ही short है, बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है, मार्क्स मिल जाएगा. मिस्टेक्स का गुंजाइश बहुत कम है, सेफ है, पता है कैसे लिखना है. लेकिन it's a small piece of advice to those students who are extremely good in English. If you have a good vocab, आपका vocabulary अच्छा strong है, and if you think that you have a very good creative mind, then I feel that virtual message शायद आपको उतना helpful नहीं करेगा जितना आपको group discussion help करेगा. Because in group discussion there is more content space. गुड लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो जो आप अंडरलाइन कर सकते हो. आपको आपका जो क्रिएटिविटी है वो आप डाल सकते हो. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आप यूज कर सकते हो. और कौन कौन से वर्ड्स आपको यूज करना है. देखो यहाँ पर मैंने वो वर्ड्स यहाँ पे डाले हैं. आई बिलीव. कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज? आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विथ यू. टू समराइज, इवैल्यूएटर की जरूरत है तो इवैल्यूएटर का यूज करना. गॉट इट. लेकिन ओनली इफ इट इज नीडेड. अगर 4 दोस्तों के बीच में है तो इवैल्यूएटर की जरूरत नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर बच्चे लोग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. इंटरव्यू राइटिंग. यू हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. यू कैन नॉट आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. आप ये नहीं पूछ सकते हो कैन यू, डू यू थिंक, will you, have you. Do not ask. Ask how, what, when, where, why. ये आपका questions होना चाहिए. Shall I tell you all something, children? ये जितने भी questions मैंने डाले हैं ना अभी, थोड़ा pause करो इस वीडियो को और ये questions को अच्छी तरह से रीड करना. Trust me, इसमें से आपको 3-4 questions तो आएगा ही आएगा. 3-4 क्या 5-6 आ जाएगा. मैं बोल रही हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग दिस? आपको 5-6 क्वेश्चंस आ ही जाएगा. फैमिली का सपोर्ट, मैसेज, फ्यूचर प्लान्स, जो हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आता ही है. सो लुक एट द क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन यू ऑल. वंडरफुल लैंग्वेज. पढ़ के चले जाओ, लिख कर पढ़ो, एंड यू कैन स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम. गॉट दिस क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. अब स्पीच में और कंपेयरिंग में और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में व्हाट आर द मुश्किल क्या क्या है मैं आपको बता दूं. ठीक है. उसके पहले मैंने आपको इंटरव्यू बताया था. राइट. अभी स्पीच पे आते हैं. स्पीच में यू हैव टू ग्रीट द ऑडियंस. तो आपका स्टार्टिंग का लाइन ये लिख लेना बच्चे लोग. ऑनरेबल प्रिंसिपल, एस्टीम्ड डिग्नेटरीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, a warm and pleasant good morning to all of you. I am, फिर अपना नाम, and I'm privileged to be given this opportunity to express my thoughts on, और topic का नाम लिख लेना. First paragraph, second paragraph, third paragraph, उसके last में आप लिखना therefore, let us करने का, let us plant saplings and make our nation a green nation. Let us unitedly work for the betterment of our country. Let us help in making my dream India a reality. Let us remove child labor from our nation. तो कुछ भी रहेगा, you should आपको let us से खत्म करना है. Are you all getting this clear, children? अब स्पीच राइटिंग का माइनस क्या पॉइंट क्या है, नेगेटिविटी क्या है? स्पीच राइटिंग में चिल्ड्रन
कोई पॉइंट्स नहीं देता है। यस, एक भी पॉइंट नहीं है। आपको सिर्फ आएगा राइट अ स्पीच ऑन salute to our farmers and farmers and soldiers. Write a speech on educating the girl child. Write a speech on. आपको पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा ना, तो आपके पास, आपको अगर आइडियाज नहीं है तो आपको वहां पर एक हर्डल आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है। दैट इज वेयर यू विल मेक मिस्टेक। तो स्पीच को थोड़ा रोकते हैं। ऑप्शन नहीं है तो स्पीच में जाते हैं। सेकंड इज कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग का प्लस पॉइंट क्या है? आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। उस पॉइंट्स के अनुसार एज पर द सीक्वेंस आप लिखना शुरू कर लो। नेगेटिव क्या है? यू शुड बी एक्सट्रीमली गुड इन इंग्लिश। गुड एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना चाहिए। अब पॉइंट्स तो देते हैं, विच आर द पॉइंट्स देंगे उन लोग? इंट्रोडक्शन देगा, प्रेयर देगा, फेलिसिटेशन देगा, वेलकम स्पीच होगा, वोट ऑफ थैंक्स होगा। दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। अब गुड एडजेक्टिव्स मैंने थोड़े डाले हैं यहाँ पर। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ so and so, let us begin. Let me welcome our esteemed chief guest, Professor so and so. And ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our wonderful chief guest, to our inspiring chief guest. Are you understanding? ऐसे आप अपना speech, अपना comparing कर सकते हो. We have presented before you huge applause for this tantalizing performances. So ये सारी जो words है ना, इसका प्रयोग करने का, underline करने का, it is going to help you. Please refer to my answer key that I have provided. I've given you all the entire answer paper. Make it a point to read it, children. Next, expansion of. तो comparing जो है, only and only if your English is too good. And practice. अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, पास्ट के पेपर्स या मेरे प्रीलिम्स के पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंपेयरिंग करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा. बट इट विल बिकम अ लिटिल लेंदी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज कंपेयर टू स्पीच राइटिंग इट कुड बी अ लिटिल लेंदी. तो कभी कभार ऐसा इश्यू हो जाएगा कि टाइम लिमिट हो जाएगा. यू मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट. तो कंपेयरिंग को बाजू में रखकर लेट अस सी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में भी पॉइंट्स दिया जाता है. तो आपको अगर मतलब पता है तो यू जस्ट हैव टू इलैबोरेट इट. 3 पैराग्राफ्स में लिखो बच्चे लोग. बिगिन विथ फर्स्ट पैराग्राफ. कोई भी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्यों ना हो, कोई भी प्रोवर्ब क्यों ना हो, you begin with proverbs are daughters of daily experience. We learn a lot from the sayings of wise men. The proverb, perseverance is the key to success, highlights the importance of hard work. समझा? आपका शुरुआत फर्स्ट पैराग्राफ डन. बोर्ड वाले पढ़ेंगे, इम्प्रेस हो जाएगा. वहां पे बोलते हैं ना, the first impression is the last impression. So this will help you to score marks. Or what you can write is, एक और मैं देती हूँ. Powerful phrases often leave a lasting impression by conveying timeless wisdom in just a few words. The phrase, perseverance is the key to success, highlights the importance of hard work. Are you getting this clear? Second paragraph में you have to write how famous personalities have taken this proverb and they have used it in their lives and how they have become successful. Steve Jobs, Walt Disney, APJ Abdul Kalam, Thomas Edison, ऐसे the Wright brothers, ऐसे कितने सारे हैं personalities है जिन्होंने बहुत, ये सारे जितने भी proverbs है, they have proved it. For example, failure is a stepping stone to success. Failures are stepping stones to success. You can give the example of Walt Disney. You can give the example of the Wright brothers, जो कितनी बार fail होकर, Thomas Edison, who said that he failed 99 times, am I right or wrong? And he was able to be right the 100th time. So ऐसे आपको लिखना है. I hope clear.
अब ये बहुत लेंथी नहीं करना है, जस्ट 2 लोगों का एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट, बिकॉज यू आर राइटिंग एज फॉर अ कॉलेज एग्जामिनेशन, what will happen if a student does not practice the proverb in his or her life. For example, if a student has the habit of procrastinating, what's the meaning of procrastinating? Postponing or delaying his work. आज करे सो कल, कल करे सो परसों, तो परसों कभी नहीं आता है. So if a student has the habit of procrastinating his work, then what will happen? The work will pile up, बढ़ते जाएगा, and he will not be able to complete it on time, which will lead to severe consequences. But if a person uses this proverb, if he inculcates it in his life, then he will get the reward for it. Are you understanding this? ऐसे आपको लिखना है, पॉइंट्स तो दिया जाएगा. हाँ, कभी कभार एक प्रोवर्ब के और भी प्रोवर्ब्स होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट एज, अभी जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाउ, यू कैन राइट सिमिलर प्रोवर्ब्स आर अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टाइम इज मनी. और तीसरा पैराग्राफ का सेकेंड लास्ट और लास्ट लाइन जो मैंने अभी दिया है ना, उसको लिख लो. This proverb has universal acceptance and should be applied by all in their lives in order to achieve success. Therefore, the proverb, perseverance is the key to success, is true to its core. Are you all getting this clear, children? तो कई बार क्या हो जाता है ना, आपको अगर स्टार्टिंग का लास्ट का पैराग्राफ्स अगर आप लिटरली कट कॉपी पेस्ट करते हो, आपका टाइम बहुत बच जाता है. Are you all understanding what I'm trying to say? It will actually help you in completing your paper faster. Let's come to film review, blog writing, appeal writing. कौन सा करना है? Best option according to me is film review or book review. Blog writing में वही email writing, blog writing में ना, you have to put those icons, and that consumes a lot of time, a lot of time. And sometimes every teacher every teacher has their own way of correcting. They will say ये icon होना चाहिए था, ये icon होना चाहिए था, and वहाँ पे आपका marks कटेगा. So according to me, best is go for film review or book review. जनरली स्पीकिंग, अभी तक जो बोर्ड में आया था, चिल्ड्रंस मूवी आया था, मतलब मूवी या बुक, बट उन लोगों ने ऐसे पर्टिकुलरली बताया नहीं ये लिखो ये लिखो. चिल्ड्रंस मूवी आएगा तो आप कोई भी मूवी लिखो तो चिल्ड्रंस मूवी हो गया. जैसे कि तारे जमी पर, तो एनी मूवी में भी तारे जमी पर लिखो, चिल्ड्रंस मूवी में भी तारे जमी पर लिखो. मैगजीन के ऊपर I'm not very sure about it. Documentary movies, I'm not very sure about it. I feel they may come, but that uska sirf 10% chance hai. 90% is on the other thing. फिर भी अगर आप पढ़ कर रखो, because you never know. I have not prepared the board paper, so I have no clue. But I have a strong feeling that's the only thing. Now grammar, follow the elimination method. 4 options हैं, एक एक करके निकल जाएगा. एक आपको लगता है इज द बेस्ट मेथड. कौन कौन सा ग्रामर के ऊपर आपको वर्क हार्ड करना है? नो सूनर, इफ अनलेस, मॉडल ऑक्सिलरी, रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, टेंसेस, चेंज द वॉइस, डिग्री, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, WH, बी एबल टू, इन्फिनेटिव जेरेंट शायद आ सकता है. दैट इज ओनली टू चेंज फ्रॉम इन्फिनेटिव टू जेरेंट और वाइस वर्सा. नो सूनर, इफ अनलेस, उसके जो स्ट्रक्चर है बच्चे लोग ये पढ़कर रख लो. रिपोर्टेड स्पीच का फंडा सीख कर रख लो. सिंपल कंपाउंडर कॉम्प्लेक्स के जो क्राइटेरिया है, 1 फाइनाइट वर्ब, 2 फाइनाइट वर्ब विद अ कोऑर्डिनेटर, 2 फाइनाइट वर्ब्स विद अ सबऑर्डिनेटर, इसको समझ कर रख लो. एंड देन द रेस्ट विल बी इजी. व्हाट्स नेक्स्ट? Yes, do's and don'ts for excellent presentation. First, remember all the formats. क्योंकि अगर आप ओवर राइटिंग नहीं करोगे, इफ यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मेट्स, यू विल नॉट ओवर राइट. राइट इन लेजिबल हैंड राइटिंग, अगर आपका हैंड राइटिंग रीडेबल है तो स्क्रिबलिंग नहीं करना वहां पर.
पूरा सेंटेंस लिखो, कैंसिलेशंस मत करो, डायग्राम्स पूरा ड्रॉ करो। ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल बंद, एसएमएस लैंग्वेज नहीं यूज करने का, नो राइटिंग यू इंस्टेड ऑफ वाई ओ यू यू, दैट्स वन thing, it's a red flag, you cannot do that. Underline the important words, use it, make it a point to underline the important words. Do not write very lengthy writing skills, 1.5 pages enough for 150 words का जो writing skills है, उससे भी थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा. Got this? Okay, now important tips. Textbook thoroughly well, focus on appreciation, novel and writing skills, and practice mind mapping. ना बच्चे लोग फॉर अप्रिसिएशन, एक हमेशा बच्चे मुझे पूछते थे कि मैम शुड बी राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्मेट और शुड बी राइट इट इन पॉइंट. आई लीव इट अप टू यू ऑल, इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन पॉइंट्स, बट अ फ्यू इयर्स बैक तक ना बोर्ड वाले यूज टू गिव अस पॉइंट्स, but now they are not giving points, they directly give you write the critical appreciation of. तो आप पैराग्राफ में भी लिखो या पॉइंट में लिखो, पॉइंट्स में लिखते हो तो ये पॉइंट्स होना चाहिए, अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो दैट इज फाइन, ऑल द पॉइंट्स हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ राइटिंग. गॉट इट? नाउ दिस ना बच्चे लोग, मैंने एक माइंड मैप बनाया था जस्ट सो दैट टू गाइड यू ऑल कि कैसे लिखना है. एग्जाम्पल, माई फ्यूचर गोल्स. देखो आपने माई फ्यूचर गोल्स को सेंटर में लिखा, उसके बाद जो नीचे 4 गोल्स मैंने दिए हैं, एजुकेशनल गोल्स, करियर गोल्स, सोशल गोल्स और पर्सनल गोल्स, इसके 2 सब पॉइंट्स दिए हैं. एजुकेशनल गोल्स में मैंने हायर स्टडीज डाला है, स्किल एनहांसमेंट डाला है. करियर गोल्स में मैंने प्रोफेशनल ग्रोथ डाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डाला है. सोशल गोल्स में मैंने सर्व सोसाइटी डाला है, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट है. एंड हेल्दी लाइफस्टाइल में, पर्सनल गोल्स में हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट. सो अगर आपका जो फुल स्केप पेपर को अच्छी तरह से भर लेगा with this kind of a mind mapping in the board exam, you're bound to score extremely good marks. अगर आप छोटा छोटा करके बहुत जल्दी खत्म कर लोगे, your marks will reduce automatically. Okay children, let's come to the next. मैंने थोड़े राइटिंग स्किल्स आपको बताए, जस्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट द फॉर्मेट. मैंने थोड़े राइटिंग स्किल्स आपके सामने प्रेजेंट किया है. लुक एट द वर्चुअल मैसेज. Imagine that you have won 2 entry tickets to a popular drama at a theater near you this weekend. You have to convey this to your best friend. Date 19 January. If you want, you can write that 2026. That's fine. Time, friend का नाम, 3 सेंटेंस में आपने पूरा का पूरा, 3 से 4 सेंटेंस में आपने पूरा का पूरा मैसेज डाल दिया, और अपना नाम, शॉर्ट एंड स्वीट. एज आई सेड, यहां पर आपका क्रिएटिविटी का गुंजाइश नहीं है. बट देन कम्स द ग्रुप डिस्कशन. 4 ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ये मैंने क्वेश्चन बैंक से ही निकाला है. इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी. सूटेबल डायलॉग्स, इवैल्यूएटर भी है. ओके नाउ, यानी कि टोटल कितने हुए? आरव, ऋषिका, नताशा, राहुल और इवैल्यूएटर. इवैल्यूएटर होगा तो इवैल्यूएटर विल ऑलवेज बिगिन विद द ग्रुप डिस्कशन. कैसे? देखो इवैल्यूएटर ने कैसे शुरुआत किया. जैसे ही इवैल्यूएटर ने शुरुआत किया, आरव का फर्स्ट लाइन होना चाहिए, आई बिलीव दैट. ऋषिका कैन बी राइट देयर, आई एग्री विद आरव. Natasha will say, but I see it a little differently. Yeah, I do not agree. As you wish. For example, junk food और home cooked food के बीच में agree disagree हो सकता है. Mobile phones should be allowed or not in college के बीच में agree disagree हो सकता है. Are you all understanding? तो ऐसे जो questions है ना, जो थोड़ा बहुत argumentative हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत agree disagree हो सकता है. अब इक्वालिटी में कोई डिसएग्री तो सवाल नहीं उठता है. तो नताशा जो है, शी हैज रिटन, आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली. मेरा थोड़ा इसके बारे में जो पॉइंट है थोड़ा अलग है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड विद दैट राहुल भी बोलता है. इवैल्यूएटर भी, इवैल्यूएटर का लास्ट में एक ये होगा कि चलो योर टाइम इज अप.
ऋषिका विल कंक्लूड इट वंस अगेन। तो ऋषिका का अगर आप देखोगे 2 बार बोल रही है, बाकी सब एक एक बोल रहा है। इवैल्यूएटर 3 बार बोल रहा है। इवैल्यूएटर देन कंक्लूड करके बोलेगा वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और उधर वहां पर ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा। इट विल कम टू एन एंड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जब लिखते हो, लुक एट द प्रेजेंटेशन. The presentation has to be extremely good, children. I hope this is clear, बच्चे लोग. Yes, now interview. ये टेबल आपको दिया जाएगा. This will come in the board examination. Questions based on this होगा. और देखा उधर एक ब्रैकेट में है, do not change the sequence of the questions. अब ये फॉर्मेट में होना चाहिए. ये टेबल ड्रॉ करो, नेम ऑफ द इंटरव्यूई, फील्ड, डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन. उसके बाद एक लाइन अक्रॉस ड्रॉ करना टू सेग्रीगेट द इनिशियल पार्ट विद द क्वेश्चंस. एंड ऑल द क्वेश्चंस में व्हाट, हाउ, हु, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, ऐसा ही आएगा. नो राइटिंग कैन यू, कुड यू, वुड यू, शुड यू एंड ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. कंपेयरिंग. सो कंपेयरिंग में ना बच्चे लोग देखो ये पॉइंट्स है. एज आई टोल्ड यू, कंपेयरिंग इज समथिंग इफ यू वांट यू कैन. आई एम नॉट very keen on your trying to do the comparing. As I said, extremely, if you're extremely good in English, you have got a good vocabulary, और आप अच्छी तरह से जो मैंने दिया वो अगर पढ़कर जाओगे, you can do it. Look at the introduction. Today we celebrate talent, creativity, and the vibrant spirit of our students through an array of music, dance, and drama. I now request our esteemed principal. Thank you, sir. I now call upon our esteemed chief guest. Okay, then thank you. Lighting of the lamp का देखो कैसे, lighting of the lamp board में अगर आएगा तो just write this as it is. Welcome song, main events. Look at the language, and now the stage comes alive. It is time for the cultural performances that offer you a delightful glimpse into our heritage and creativity. Okay, these are they will transport you to a world of magic and music. Dear audience, let us welcome each performance with a big round of applause. The vote of thanks. वोट ऑफ थैंक्स अगेन आ सकता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस आ सकता है. ओके, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल एड्रेस? वेयर यू इनवाइट द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस. एक्सपैंड द फॉलोइंग. ये भी क्वेश्चन बैंक का है. बिलीविंग इन योर सेल्फ इज बिलीविंग इन द बेस्ट. टू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव. ये पॉइंट्स दिया हुआ है. देखो 3 पैराग्राफ मैंने डाला है. सेकेंड पैराग्राफ में मैंने कितने मैंने 1 2 3 पर्सनालिटीज के बारे में लिखा. एक सेंटेंस ही लिखा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड लास्ट में मैंने इन कंक्लूजन लिखा. Thus true success begins with self belief. मैंने कंक्लूड कर दिया. Got this very clear? And last but not the least, this is the second last, I have given you all book review, Wings of Fire. Wings of Fire में मैंने यहाँ पर टाइटल, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मॉरल मैसेज, माय ओपिनियन एंड क्रिटिक्स रेटिंग सब कुछ डाला है. Make it a point to read it. So if at all you get a book review, do write Wings of Fire, children. Are you understanding? And we have a film review. Again points दिया जाता है. Okay, मैंने तारे ज़मीं पर लिखा. तो चिल्ड्रंस फिल्म हो तो भी लिखो, सोशल फिल्म हो तो भी लिखो, सिर्फ मूवी है तो भी लिखो. कैरेक्टर्स है, एंटेगनिस्ट है. एंटेगनिस्ट कौन होता है? एन एनिमी. एंटेगनिस्ट भी मैंने यहाँ पर डाला है और उसको अंडरलाइन भी किया है ताकि बोर्ड वालों को समझ में आ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देन उसका जो पोएम्स है, उसके जो सॉन्ग्स है, और व्हाई डिड यू लाइक द पोएम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिक रेटिंग्स. अगर कभी कभार क्रिटिक्स रेटिंग नहीं भी आया तो भी डाल दो, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि बोर्ड को, एग्जामिनर को लगेगा अच्छा बच्चे ने क्रिटिक्स भी का रेटिंग्स भी डाला है. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
Now, appeal writing, a few students always tell me, Miss, can I go for appeal writing? Yes, you can go, but you have to be careful how to write an appeal writing. यहाँ पर मैंने आई डोनेशन के ऊपर डाला है, देखा मैंने एक लोगो दिया, और अगर आप देखोगे इट इज नॉट लाइक पैराग्राफ, पैराग्राफ जैसे नहीं लिखने का, ऐसे थोड़ा स्पेस करके, थोड़ा स्लोगन्स, आई डोनेशन, नोबल डोनेशन, गिव साइट, गिव लाइट, मेक समवन्स लाइफ ब्राइट, are you understanding? Pledge your eyes today to give light to someone tomorrow. ऐसे थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग वे में एक पेज में होना चाहिए. शुरुआत में करो, एक पेज के अंदर खत्म करो. बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर वो हो जाना चाहिए. Are you understanding, boys and girls, my dear students? This is your guide, your tips and small guide on how to score extremely good marks in your board examination. Okay, children. Now you just have to go through all these notes again. Okay, and I'm sure you will be thoroughly prepared for your board examination. So, once again, best of luck to all of y'all. Scoring 90 plus is not so difficult now. Am I right or wrong? It has become now easy for y'all. So, children, with this, I end my session. Stay blessed. God bless each one of y'all. Best of luck for your board examination, children.